So this is the question number 12 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic errors in Python. So in this particular question, a code has been given to you and it has been asked when this code will execute, which type of error it will particular give. तो अगर मैं बात करूं इस कोड की तो लाइन नंबर 1 में क्या है, आप एक लिस्ट डिफाइन करिए आपने। लाइन नंबर 2 में क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0, देन यू इटरेटिंग ए लूप व्हिच विल एक्जीक्यूट द वैल्यूज ऑफ लिस्ट। तो फर्स्ट केस में x की वैल्यू क्या होगी आपकी, s। नाउ यू विल से एलिमेंट इज s, आप क्या कर रहे हो, उसको वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हो। देन व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू ऐड वैल्यूज इनटू अ वेरिएबल व्हिच इज रिजल्ट। तो फर्स्ट केस में जब आप क्या करना चाह रहे हो, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस एक्स। तो जब आप जीरो को x से प्लस करोगे तो इट विल गिव यू टाइप एरर। व्हाई, बिकॉज x क्या है आपका इस केस में, स्ट्रिंग यानी कि s है। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऐड जीरो विद s, in that case it will give you type error. If you wish, you can see this one on the IDE as well. If you try to run this one, you will get type error, and error क्या है आपका, unsupported operand type for integer as well as string. Hence, for this one, option number C is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then. Thanks for your time.